Okay. So in today's class we will do question number 8. So question number 8 is water is being poured into a cuboidal reservoir at the rate of at the rate of 20 liters per minute. Means आप अपने टैंक में पानी डाल रहे हो, रिजर्वॉयर में पानी डाल रहे हो, and at what rate? 20 liters per minute. Means in 1 minute you are pouring 20 liters of water, right? And then they are saying if the volume of the reservoir is 156 meter cube. So volume of reservoir is 150 meter cube. So this is the volume of the reservoir, right? And you are pouring water in this reservoir at what rate? 20 liter per minute. So it means in 1 minute you are pouring 20 liters of water. और आपने total कितना पानी डालना है? 150 meter cube. Now here the units of volume is in meter cube and here your volume is given in liters. So first of all we have to change our units. We have to change this meter cube into liters or liters into meter cube, right? So how to convert this 150 meter cubes into liters? We will multiply it with 1000. So 150 into 1000 liters. So that is 150,000. So it is 1,50,000 liters, right? Okay. So it means your volume of reservoir is 1,50,000 liters, and the rate at which water is flowing is 20 liters per minute. तो आपको कितने लीटर्स पानी डालने हैं? 1,50,000. 1 मिनट में कितना पानी जा रहा है? 20 लीटर्स. तो आप बताओगे मुझे कि कितने मिनट्स लगेंगे, कैसे निकालोगे? 1 मिनट में 20 लीटर जा रहा है. 1,50,000 लीटर जाने के लिए कितने मिनट्स लगेंगे? We will divide or multiply? Divide. We will divide 1,50,000 liters by 20 liters. Right? It's simply like जैसे suppose आप ये मान सकते हो कि आप 1,50,000 टॉफीज लेके आए हो और आपने हर बच्चे को 20 टॉफीज देनी है, तो आप कितने बच्चों को दे पाओगे? तो आप ऐसे ही बोलोगे ना 1,50,000 को 20 से डिवाइड कर देते हैं, हमें पता लग जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे जितनों को हम दे पाएंगे, राइट? इन द सेम मैनर यू हैव टू fill a reservoir with 1,50,000 liters of water, and in 1 minute 20 liters of water you are pouring in. So how much time it will take? So time will be 1,50,000 divided by 20. Clear? So time required to fill the tank is equal to 1,50,000 divided by 20 minutes, right? Yes. So this you can do. What is this? Simplify it. What you will get? Very simple. You just have to divide by 2. So you will get 7,500 minutes. Now, is it okay to give answer like this 7,500 minutes, or we should convert it? We should convert it in hours. So you will convert this time in hours yourself, right? I hope you know how to convert. You know this, right? Yes. Okay. Okay. Now, in question number 9, it says that a cuboidal box is 380 centimeter long, 250 centimeter wide and 120 centimeter high. So you have a cuboidal box whose length, breadth and height are given to you, right? And they are saying how many cuboidal boxes of volume 625 centimeter cube can be placed in it.
It's simply like you have a cuboidal box, like suppose this is your room whose length, breadth and height are given to you, and we want to store some boxes here in this room. ठीक है, and the volume of one box is given to you, that this box will occupy this much space in the room, and I'm asking you how many such boxes you can fit in this room. तो आप बोलोगे मैम volume of the room and the number of boxes which we will keep in this room, their volumes should be same. तभी आएगा ना इसमें, अगर ये पूरा रूम आपने भरना है तो इस रूम का जितना भी स्पेस है, जितना भी इसका वॉल्यूम है, वो पूरा वॉल्यूम हमने भरना है उन छोटे छोटे बॉक्स से. तो उन सभी बॉक्सेस का वॉल्यूम मिला के इस रूम के बराबर होगा जब ये पूरा रूम टोटली हम फिल कर देंगे उन छोटे छोटे बॉक्सेस से. राइट? तो इसका मतलब अगर मुझे निकालना हो हाउ मेनी सच बॉक्सेस वी कैन फिट इन दिस रूम, व्हाट वी विल डू, we will divide the volume of this room with the volume of one box. Clear? Yes. So in the same manner, in question number 9, you have a cuboidal box. एक बड़ा सा बॉक्स है जिसके अंदर आपने छोटे छोटे cuboidal box डालने हैं. So we'll find the volume of that bigger box. We'll find the volume of that smaller box, one small box which we will put inside that cuboidal box. We will divide the volume of that bigger box by the volume of that smaller box and we'll get the number of boxes that can be adjusted or fitted in that. Clear? Yes, ma'am. Any problem? No, ma'am. Okay, so let us start with the question. So you have cuboidal box whose dimensions are 380 cm. Khushi, you will tell me the dimensions, okay? Cuboidal box. Yes. What is the length? 380 centimeter. Breadth? 250 centimeter. Height? 120 centimeter. So we will find the volume of this cuboidal box. What is the formula for volume? L into B into H. That is 380 into 250 into 120. I hope you can multiply and calculate your volume whose units will be centimeter cube. Right? Okay. Now let us find the volume of those small boxes which we have to put in this box. So okay. So volume of the small cubical boxes or cuboidal? So volume of small cuboidal boxes is already there in the question. What is the volume? 625. Volume of smaller cuboidal, volume of a smaller लिखेंगे, एक का लिख रहे हैं, okay? Box is equal to how much? 625 centimeter cube. Okay. तो ये आ गया आपका volume of the smaller cuboidal boxes. Now number of boxes equal to, how you will get? By dividing the volume of this bigger cuboidal box by the volume of smaller cuboidal box. So that is volume of bigger cuboidal box over volume of a smaller cuboidal box. I hope you can substitute and calculate the answer. Right? Yes, ma'am. Any problem in this? No. Okay. Now we will discuss question number 10. But question number 10 is exactly same like your question number 6. Question number 6. Because in question number 10 also they are saying that you have to construct a wall whose length, breadth and height are there in the question, and the dimensions of bricks
is also there, and you have to find the number of bricks required to construct that wall. So it's similar to your question number 6, so you can do this question yourself, right? Okay. Next we have question number 11. In question number 11 they are saying what is the maximum length of the pole which can be placed in a rectangular storeroom of dimensions 10 meter, 7 meter and 5 meter. So you have a storeroom whose length, breadth and height are given to you, right? And you want to keep a very long pole in that storeroom. So they are asking you what can be the maximum length of that pole which can be placed in the storeroom. So for this we will discuss one topic, diagonal. We will discuss the topic diagonal first and then you will come to know. Okay? So first of all, what are diagonals? So you know in a rectangle the line joining the opposite vertices is known as diagonal. पता है ना आपको? So in a rectangle you have two diagonals. In square again you have two diagonals. So diagonals are the lines which joins the opposite vertices of your rectangle or your square, rhombus, whatever, quadrilateral, parallelogram. But what about the diagonals of three-dimensional figures? Three-dimensional figures like your cuboid, right? उनके diagonals कैसे होते होंगे? उनके तो 6 फेसेस हैं. जैसे ये क्लासरूम है, आप इस वॉल को कंसिडर कर लो. तो इस वॉल का डायगोनल में आप इस तरह से क्रॉस बनाएंगे, इस तरह से क्रॉस बनाएंगे. यू विल हैव टू डायगोनल्स. तो क्या हमारे 3 डायमेंशनल शेप्स जो होते हैं उनमें क्या 2 डायगोनल्स हेयर, 2 देयर, 2 टॉप, 2 बॉटम, 2 लेफ्ट, 2 राइट क्या इस तरह से होते होंगे? नहीं. ठीक है, तो इनके डायगोनल्स कैसे होते हैं आप वो समझने की कोशिश करो. I will explain with the help of this room only. So what will happen is, okay, just a minute. So I'm taking help of this box which is cuboidal in shape to explain you the diagonals. Okay, so I'm opening this box so that I can explain diagonals to you properly. ध्यान से समझना. This is your cuboidal box. Okay. अब इसमें अगर आपने सबसे लंबी कोई रॉड, अगर मैं आपसे पूछूं आप कितना लंबा रॉड सबसे इसमें रख सकते हो, तो आप इसमें क्या करोगे, ये जो कॉर्नर है फ्रंट में यहाँ से स्टार्ट करो और क्रॉस में यहाँ तक अंदर जाओ. यहाँ से मैं यहाँ तक नहीं बोल रही हूँ कि यहाँ से यहाँ आ जाओ, नहीं, मैं बोल रही हूँ यहाँ से अंदर तक जाओ कॉर्नर में. तो वो आप यहाँ तक, तो वो आपकी सबसे लंबी रॉड होगी जो इसमें आ सकती है. यहाँ से कहाँ, अंदर तक यहाँ, राइट. ये आपका एक डायगोनल हो गया. आपका दूसरा डायगोनल कहाँ होगा, मैं यहाँ से चली थी ना, अब मैं इसी साइड कॉर्नर में अंदर से चलूंगी यहाँ से, तो मैं कहाँ तक जाऊंगी, बाहर की तरफ आऊंगी यहाँ तक. दैट इज योर सेकेंड डायगोनल. ठीक है, तो मैंने इस कॉर्नर से लिया बाहर से अंदर तक एक, और दूसरा मैंने लिया इसी कॉर्नर के अंदर से बाहर तक. यू हैव 2 डायगोनल्स हियर. ना इस तरह से अभी इस साइड आ जाओ. यहाँ से जाऊंगी मैं क्रॉस में यहाँ अंदर, और फिर मैं यहाँ से जाऊंगी क्रॉस में यहाँ, सॉरी यहाँ से यहाँ. आई कैन नॉट सी, सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आर द डायगोनल्स, राइट. तो इसमें कितने डायगोनल्स आएंगे, एक यहाँ से जाएगा यहाँ अंदर, एक यहाँ से आएगा यहाँ अंदर 2, और फिर एक यहाँ से यहाँ 3, और एक यहाँ से यहाँ 4. सो यू हैव 4 डायगोनल्स इन क्यूबॉइड और क्यूब, राइट. ओके, तो डायगोनल की लेंथ का एक फॉर्मूला होता है. देयर इज अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द डायगोनल. सो दैट फॉर्मूला इज लेंथ ऑफ द डायगोनल, आप d लिख सकते हो इसको, इज इक्वल टू अंडर रूट l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस x square. This is the formula to calculate the length of the diagonal in case of cuboid. But अगर क्यूब होगा तो क्या होगा, क्यूब में तो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम होते हैं, जिसे हम a लेते हैं a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दैट इज 3a स्क्वायर अंडर द रूट. तो
तो इसमें a square, we can take out this a square, so a will come out of the root and 3 will remain inside. So diagonal of cube is a root 3 and diagonal of cuboid is under root l square plus b square plus h square. So whenever they talk about the longest rod that can fit inside a cube or a cuboid, then you will use these formulas depending upon, if they are talking about cuboid, then use this. If they are talking about cube, then use this. So in the question number 10, right, they are talking about cuboid. They are talking about cuboid whose length, breadth and height are given. How much is your length? 36 meter. Breadth? How much? Check in your books and length is, length is 10 meter, breadth is 7 meter and height is 5 meters. Length is, Kushi just tell me, 10, breadth is 7 and height is 5 meter. So what will be the length of diagonal? It will be under root L square plus B square plus H square. That is under root 10 square plus under root 7 square plus under root 5 square. And that is 100. 10 square is 100. 7 square is 49. 5 square is 25. Add all three. What you will get? So you will get under root 174. Now you have to find the square root of 174. So what is the square root of 174? So after calculating the square root, you will get the length of the diagonal, and that means you will get the length of the longest rod that can fit inside this cuboidal box. Okay? So complete the question, and that's all for today.